Hello, hi everyone. Good evening. Hello. All right, so we'll just wait for a couple of minutes so that everyone else who's trying to join in can join in. It is festive season, so we might have less attendance today. All right, so let's begin because we need to cover a lot of things today as well. All right, so we did not do a live session last week because, of course, I had a family emergency and I could not do it, but I did share the list that we always do every weekend. However, let's begin our analysis. Let's start the session and let's see where we are. Now, let me start sharing my screen. All right, so I'm going to start with the list that we've already scanned. So we've got about 26 stocks that we're going to speak about, and hopefully we'll find something that has a decent setup. So in my chart, we've got a weekly chart on my left hand side, a daily time frame on the center, and on the right hand side I've got an hourly chart. I've already got a question. NMDC steel, how is it looking? We'll have a look, don't worry. So let's finish scanning the stock first, and then we go to whatever you want me to look at. All right, so let's start. The first stock we have is Abbott India. Abbott India is in the list because it is at weekly EMA. At weekly EMA, we have a bullish divergence, and then we have a from monthly CPR S1, we do have a 0-1 possibility. All right, so when do we say possibility, what do we mean? We mean the retracement, and then you want the prices to go higher. Of course, you see where the CPR is in the hourly chart, and you can take the position accordingly. Again, remember guys, when we discuss this, it is always as an educational message and not really as a tip. So people who don't know the system that well, try and understand and see if this stock works according to your system, and they have a setup according to your system, and do the needful. Of course, if you want to learn, just get in touch with us, and we'll be more than happy to teach. All right, so Abbott India is almost like a with the trend trade on the upside, but however, when we go to the indices and try and analyze how Nifty and Bank Nifty looks, you need to understand आपको ये समझना जरूरी है कि हम बहती गंगा मतलब जिस वे ट्रेंड है उसी वे ट्रेड करें तो बेटर रहेगा. All right, so let's go to Alchem Lab, next stock. Alchem Lab, again, same thing at EMA. You have a decent candle set up here sideways when markets are falling horribly. This did not do that bad, to be honest. And in the daily chart, you have bullish divergence, series of bullish divergences, went till the monthly CPR and kind of did a pullback. So now, of course, you have a narrow CPR here as well. You see the horizontal line I have in the hourly chart, ये वाला line. ये आपका immediate resistance line है. So if it breaks out, or if it goes above the narrow weekly CPR, if it kind of starts going above the monthly CPR, this is a decent entry point for this particular stock as well. All right, now the next stock we have is Balkrishna Industries. Balkrishna Industries, you can see there's a bearish divergence in the weekly chart. There is one in the daily chart as well, and it started falling already. In the hourly chart, you can use the CPR, or you can just use the weekly and the daily setups, to be honest, and take trades. Of course, monthly CPR is wide CPR, so it might not do much this month. So whatever 10 days are left, I think next week is the expiry week, if I'm not wrong. So it might not do a lot of it. It might move sideways next week and then give you a narrow CPR next month in November and start doing the do. But there is a bearish divergence and there is a poor candle formation as well, and the prices can come till the weekly EMA if there is a confirmation as well. So you can take that opportunity. Then you have Bank of Baroda. Bank of Baroda, same thing, bearish divergence in MACD and RSI as well. You have a tick down, you have you don't have a follow through yet, but you might have one if it opens lower. If it opens lower, then that is when you have a monthly CPR, you will have a weekly CPR and everything. So if it kind of does a magnet trade in a weekly CPR, again, if you don't know these terms, there's only one way to learn
get in touch. We'll teach you how to do this and the terminologies as well. But anyway, coming back to it, maybe it goes back up here, takes a resistance from the weekly CPR and then gives you a trade. I've seen while scanning the stocks this week कि काफी जगह पे मंडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड देन हेंस आपको ट्यूसडे एक ट्रेड मिल सकता है in a particular trend in few stocks. So Bank of Baroda again weekly has a bearish divergence, so you need a setup or an entry opportunity on the downside if it is confirmed. Then you have Bosch Limited. Now Bosch Limited is one of those rare stocks which you see I have put an alert here as well. This is at daily EMA, which is a doji here at daily EMA. After you can see there was a series of resistance here, broke out doji, and there is a bullish divergence in hourly charts, and there is a narrow CPR. So I put my alert above the CPR, but I will be interested above the high of today's candle as well. So it will be pretty interesting. So we'll see Bosch, one of the stocks which has given a bullish entry setup. Then we have Chola Mandalam Investment. Chola Mandalam Investment has a bearish divergence with a tick down. You see there's a bearish divergence, there is a tick down here, and there is a triple bearish divergence in the daily chart, and there is a confirmed divergence as well. So you want a follow through. That means you want the prices to still keep falling, maybe ticks up and then falls, either way. But this is on the bearish side, and there is a setup which basically enables the prices to fall further till the EMA, maybe monthly S1 as well. All right, so there's a decent setup as well. That is why it is in the list. Next up we have is Container Corp. Container Corp, again, bearish divergence in the weekly chart. It has come down. Now in the daily chart, you're looking for selling opportunities unless there's a bullish divergence in the daily chart. All right, so you are looking for selling opportunities if you get one. There is a bearish divergence, hence it is in the list. However, it's not the best setup. So in fact, if I wanted to get rid of it, I can, but just because there is a bearish divergence, I'm invested. I would like to look at it. So it's in the list. Cummins India, there is a very small, we had this in the list last week as well. There's a very small bullish divergence. There's a series of tick ups as well. In the daily chart, you see there's a divergence here as well. Now it's gone up, pulled back. I would like, of course, the monthly CPR के ऊपर ये candle बंद हुआ था Wednesday को 11th October. No follow through. Came back, closed today below monthly CPR. So अगर ये follow through नीचे की तरफ हो गया, then of course we are not entering. But let's say there's a gap up or something, then I would be keen to enter it on the upside because of this very shady but still existing weekly bullish divergence. All right, so that is the plan for Cummins India. फिर आता है हमारे पास Dixon Technologies. Dixon Technologies of course is doing well, no problem. I don't know why it is in the list. I think last week का list से add हो गया, इसको हम हटा देते हैं. Dixon not interested. Dr. Reddy, now interestingly, of course, it is one of the best setups that I had, but market ने साथ नहीं दिया, ऐसा बोल सकते हैं. CIP है change in polarity, so breakout change in polarity. At change in polarity, we have series of bullish divergences, then a 012. Then ये देख सकते हो आप, ये वाला कैंडल मंथली CPR के ऊपर बंद हुआ, लेकिन अब फॉलो थ्रू नहीं दिया. कल वाला टड़क एंड देन मंथली CPR के नीचे बंद हो गया. So two case scenarios. I'm not looking to sell this. No way. There's no, यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं. लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है और ये नैरो वीकली CPR के ऊपर जाने लगता है, so if it starts going above this and basically if it opens gap up and breaks today's high, I would be interested in taking a position on the long side. ठीक है, so थोड़े stocks long positions के भी हैं, but majorly whatever I've noticed, it's short position. But again, you can guess it, I don't remember. Let's do the scanning together. ठीक है, so Dr. Reddy का यही plan है. Again, remember guys, इसके रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट से थोड़ा सा रिजल्ट के आसपास हम ट्रेड नहीं करते हैं. वी स्टे अवे फ्रॉम दैट. सो रिजल्ट्स के दिन या रिजल्ट्स के पहले वाले दिन we don't take that risk. Now GAIL India has a weekly bearish divergence in RSI and MACD as well, which is again suggesting that the prices are going to go lower. Monthly R1 से गिर गया, and of course you have a wide weekly CPR. इसका मतलब once again that it might move sideways, so it might give you a pullback till this CPR section, CPR zone, and then do something here and then give you an opportunity. So maybe not immediately on Monday or something, but you do have a weekly bearish divergence which needs a confirmation as well. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर. हिंदुस्तान कॉपर में क्या है, ये वीकली चार्ट है. डेली चार्ट
में हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है. इनफैक्ट it is at EMA. We had a bullish divergence here on 9th of October. It's gone back, tested the monthly CPR. Now it has a poor candle today, but it does have a bullish divergence in the hourly chart. So अगर ये 012 setup है, इसका मतलब pull back है and you're expecting the prices to go higher. So two things should happen. One, it should open gap up, and second, it should break today's high or go above the narrow CPR that you have in the hourly chart. Either way, you need more confirmations. But if that confirmation comes, I would be happy to take long positions. Short में भी ऐसा कोई इसमें opportunity है नहीं. So if that doesn't happen, then we just wait. India Cement weekly at EMA, daily we have a bullish divergence. So India Cement is something that we would like to take in our stride. Now of course it has to go and break the high जो कि कल विक्स पे हो तो रहा है लेकिन वीकली सीपीआर नहीं टूट रहा है. नाउ वी हैव अ नैरो वीकली सीपीआर एंड इट माइट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी और माइट गिव अस अ ट्रेड आल्सो ऑन द अपसाइड. इन द वीकली चार्ट आप देख सकते हैं ये ट्रेलिंग हाई चल रहा है. प्रीवियस वीक का कोई भी हाई नहीं टूटा. और ये अच्छा कैंडल है, बुलिश हरामी एंड डोजी. सो इफ द हाई ब्रेक्स व्हिच इज आल्सो टुडेज हाई, अगर ये टूटता है देन आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन फॉर अ ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड वंस अगेन. फिर हमारे पास आता है कोटक बैंक. कोटक बैंक इसलिए लिस्ट में है क्योंकि हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है. लास्ट वीक में थोड़ा सा रिलक्टेंट था बिकॉज ये नीचे खुल के वीकली चार्ट में नीचे खुल के व्हाइट कैंडल बनाया था व्हिच इज अ लिटिल डॉजी. नाउ अभी अच्छा है, कंटिन्यूएशन है, डिसेंट सेटअप, बुलिश डाइवर्जेंस, मंथली सीपीआर पे है, मंथ का लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक. इनफैक्ट नेक्स्ट वीक आई थिंक it'll be a very very good analysis session because you'll have end of expiry as well. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेली चार्ट में भी मंथली सीपीआर पे रेजिस्टेंस ले रहा है. अगर ये फॉलो थ्रू देता है, इवन वीकली हाईज टूटते हैं एंड ऑल दैट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक आल्सो टू गो अ लिटिल हायर. ऑलराइट, वंस अगेन जिसके रिजल्ट्स डेटा सब आ जाएंगे तो कल मंडे जो रिएक्ट करेगा वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा इस स्टॉक पे. Excuse me. Now, Dr. Lalpath Labs में वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस है, आप देख सकते हैं. टिक डाउन भी हो गया. नाउ इट हैज अ ह्यूज विक ऑन द डाउन साइड, तो इसका कंफर्मेशन आना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी डाउन साइड. अब आपको डेली में भी बेरिश डाइवर्जेंस है. फेल, इज दिस अ 012? वी डोंट नो. अगर if I can show you this, like kind of zoom out, so लॉन्ग टर्म में मे बी आई एम बुलिश बिकॉज इसका मंथली चार्ट काफी अच्छा है डॉक्टर लालपाथ लैब्स का. लेट मी जस्ट चेक. यस, प्रीटी डिसेंट. वीकली चार्ट या डेली चार्ट में यही सेटअप है. अगर ये 012 होता है और नीचे आता है तो नीचे आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है. बट मुझे लगता है ये टिक डाउन का कंफर्मेशन बहुत दूर है. इट इज टू फार, सो दैट माइट नॉट हैपन नेक्स्ट वीक. बट बिकॉज देयर इज अ वीकली बेरिश डाइवर्जेंस एंड वीकली सेटअप, वी पुट दिस इन द लिस्ट. Then we have LTFH. LTFH में I think there is a daily bearish divergence with earnings. Again data आएगा इसका. मंडे कैसे रिएक्ट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. एंड we'll see how it is. Again ये ट्यूसडे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. मंडे will be a reaction to the data today. Then we have Marico. Now Marico of course आपको याद होगा तो हमने ये डेटा हमने रखा था इस लिस्ट पे few weeks ago, couple of weeks ago, and हमने ये बोला था कि हाँ ये टेस्ट होगा, 012 होगा and then it'll fall. Now it fell, it went to EMA और monthly S1 से रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू हुआ. Hourly chart में आप you can see there's a bearish divergence with 012 kind of a setup. Now hourly chart के हिसाब से जो लोग एक दिन या maximum intraday kind of a trading करते हैं उनके लिए टारगेट आ चुका था, वहीं से एक बाउंस लिया है 161.8%. Now remaining a few who think that this is gonna fall further at least till the previous low, which is a possibility, why not? Then this is the narrow weekly CPR and you might get a gap down or a test, or एक दो कैंडल ऊपर टेस्ट करके फिर गिरे, वो भी बहुत अच्छा है. So nonetheless this is an opportunity that you can count on as well on the short side I think. And yes, take advantage of it if it gives you an opportunity. Maruti में again there is a bearish divergence with a tick down. RSI as well. Daily chart में also there is a bearish divergence in RSI and you have a narrow CPR in the hourly chart.
in the weekly CPR, so hourly chart. Now again, this is a very, very good opportunity, and you might want to take a trade here as well if you like. Okay, so you might want to take advantage of this as well. So filter your stocks. I think there are few very, very good setups that I've scanned here, and वो हो सकता है opportunity दे दे. Once again, it will depend on how the markets open on Monday. The next stock is MGL. Again, there is a bearish divergence, but a very big candle. So the risk reward here, if you enter a trade, is very, very poor. So now you need to, you see there's a weekly CPR which is very wide, so you might have to wait for the prices to come back to the EMA and then maybe enter a trade. So इसको हम actually हटा देते हैं. I know there's a weekly bearish divergence, but what are you gonna do? The risk reward ratio will be very, very poor. Now then you have Info Edge. Info Edge may at weekly EMA there is a bullish divergence. And there is a probable 012 here as well. Now again, Info Edge, if it does give you a follow through, that is important. Now there is a gap here. Daily में एक gap है जो exhaust नहीं हो रहा है. So this gap, no follow through. ये क्या ये test है? क्या ये exhaustion होगा या नहीं होगा? We'll come and check it out on Monday. Now Monday it becomes important because there is a bearish divergence here. So ये re-entry at EMA भी हो सकता है नीचे की तरफ. और अगर ये गैप अप खुलता है या कोई भी एक आर्ली कैंडल भी इसे एग्जॉस्ट कर देता है इस गैप को, then you can trade on the upside considering this is a 012. Okay, so when I say 012, you can see the retracement should be about 61.8% or 78.6. This is where we look to enter. The next stock we have is Reliance Industries. अब Reliance Industries में आप देख सकते हैं weekly chart poor है, daily chart में यहाँ with the trend trade था which fell from 2360 levels to 2296 levels. Now this is in the list just so that you can keep an eye on it, क्योंकि यहाँ पे monthly S1 पे डबल बॉटम एक डाइवर्जेंस ऑलरेडी था विच EMA तक आया था. अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है या एक मंडे को एक और रिवर्सल कैंडल बना देता है, then Tuesday onwards you might be able to take a buying position in this. Okay, so I'm not saying to take one, ये fall एकदम tradable था, but right now you need to keep an eye on it कि Monday कैसे खुलता है. Once again it will react to the data जो आज आएगा या आया है. Alright, so we're gonna see how it opens on Monday. SBI is in the list. I think this is just to watch right now because there is a bearish divergence for 012 है. क्या ये, क्योंकि we are looking to sell in this particular setup. You can see there is a change in polarity, goes up, support level goes up. Now if it comes and hits this or breaks out, like breaks this support level, then it's going to be very tricky. So इसको मैं actually हटा देता हूँ इस list से ताकि हम इसको बाद में देख सकें. अभी इसमें कुछ trade होगा नहीं next week. SRF, again, I think there's a bullish divergence here. It is to be watched because there is a possible 012. Once again, if the markets open on a bullish note or on a high on Monday, this is how we're gonna react to that. Okay, otherwise we're just gonna wait and see what happens. Of course, यहाँ पे दो गैप्स हैं, एक गैप डाउन exhausted by a gap up, and ये gap up support की तरह act कर रहा है. But एक gap up opening and ये वाली level जो आप अर्ली चार्ट में देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है प्रॉपर्ली. ऑलराइट, सो एसआरएफ का वही स्ट्रैटेजी है. इसके बाद हम आते हैं टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ट्रेलिंग हाइस चल रहा है, एक स्पाइक है ऑफ कोर्स यहाँ पे एट वीकली ईएमए. डेली में देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस. यू कैन सी देयर इज अ ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंस, फैंटास्टिक टिक अप एज वेल. वेडनेसडे अर्निंग्स है, सो मंडे ट्यूसडे को पुल बैक का ट्रेड मिल सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेट्स सी. लेकिन ये डोजी के हाई टूटता है तो मिल सकता है. Weekly narrow CPR, so it's a pretty decent setup to be honest. So if it breaks the high of this particular doji, we could probably enter, use the CPR or the low as your risk, and yeah, take an opportunity till here. Why not, right? Could be a good trade, and if it breaks the week's high, then of course you're in for the long run. But monthly S1 पे daily bullish divergence is not a bad deal. तो ये भी एक अच्छा setup है. Then you have Vedanta. Now a lot of people were talking about Vedanta. We do have a bullish divergence. This was a tick up candle. ये ऊपर खुल के नीचे गिर गया, so no really good trade here, and tick up still ticking up. So bullish divergence अभी तक है, लेकिन हमारे पास confirmations नहीं आ रहे अच्छे से. Like ये candle MCPR के ऊपर बंद हुआ लेकिन no follow through. फिर again ये बंद हुआ लेकिन no follow through. अब ये नीचे के और बंद हो गया. So क्या ये you can see क्या ये
let me just, क्या ये नीचे की ओर जाएगा या यहाँ पे गैप अप खुल के एक बार बंद होगा एंड फॉलो थ्रू देगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर वेदांता आई थिंक वन गुड वीक एंड देन मे बी समथिंग टू डू अबाउट इट. सो अगेन इसको भी मैं चाहूँ तो एक बार हटा सकता हूँ इस लिस्ट से, बिकॉज वी वुड लाइक really good setups to be here. Now Z Entertainment, this again on the upside, you can see it has corrected till the value zone in the weekly chart, and in the daily chart we have a bullish divergence, and beautiful. If you see my hourly chart, there's a beautiful resistance here, which is basically ये जो rectangle बना हुआ है ना, ये जो zone consolidation हो रहा है, and this could be like a, you know, a breakout on the upside and you might get a trade on the upside, which is also a monthly CPR here. Next month का CPR भी narrow ही होगा मेरे को लग रहा है जिस तरीके से move हो रहा है. So this is something that again you might keep an eye out for. Once again, of course, you would like to trade above the breakout, because that is where you know, the weekly highs टूट जाएंगे and everything, and you'll be more confident of the trade. But yes, there is a setup that you would like to keep an eye out for. Of course, ऊपर नहीं जाता है तो we don't do anything, we just wait for a better opportunity. So this is what this is how many stocks we have. We have got about 22 stocks इस week के लिए, and hopefully they'll give you a good trade. संभल के trade लीजिएगा, because there are uncertain situations right now. Don't hurry into a trade, and don't take too many trades, because that again, if something happens, you know, सब एक तरफा ही हो जाएगा. Right? Let's go to indices. Then we go to commodities, and then we talk about the cash stocks that we've picked for the next few weeks. जो अभी ऐसा setup पे है जो हम उसको देख के ले सकते हैं, ठीक है? And especially when the markets are falling, you know, if we get something like that, why not? All right. So Nifty, looking at Nifty, you can see if I open my monthly chart. Okay, I'm just opening monthly chart to give you a brief. सो टिक डाउन हो रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी था पहले से, सो उसको हम छोड़ देते हैं, बिकॉज अभी एक और अभी कुछ दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं रफली. वीकली चार्ट में देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर व्हिच वाज सेंसर्ड, सो अगेन इट नीड्स टू काइंड ऑफ, इफ दिस इज अ वेल, I think it is a poor candle, it's an engulfing bear. We need to wait for a daily chart to see what's going to happen. Now daily chart you can see, right, monthly CPR से resistance लेके नीचे जा रहा है, ये रहा आपका S1. Now to create a bullish divergence has to come till here. Now again, once as I said, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब तक ये मंथली CPR के नीचे रहेगा मैं बुलिश ट्रेड्स नहीं लूंगा. तो लास्ट टाइम भी हम लोग जब भी हमने स्कैनिंग किया है, I could not enter long positions because it never gave me a follow through above the monthly CPR, so I couldn't get into it on the long side. अभी भी मेरा प्लान ये, अगर मुझे एक और हफ्ता वेट करना होगा मंथली CPR चेंज होने के लिए, आई एम हैप्पी टू डू दैट, but I'm not going to enter a long position unless it goes above the monthly CPR. Now, but the point here is, can I go short? Now, the problem here is we do have a hourly bullish divergence today. So there is a possibility that it might open a gap up and might test the gap, might pull back a little. ये possibility है. लेकिन अगर gap down खुल जाता है, then you can probably, you know, take advantage of that. I think I've got my future pivots here, which is not on. Yeah, so let's say because of this divergence in the early chart, I think this was gonna come here, test the gap also with the weekly CPR, and then maybe if it takes resistance, I might take a short sell position here. But again, this is all if, right? अभी इसमें कोई bullish sign नहीं है निफ्टी में, तो या तो होगा next week करते करते and फिर हम ले लेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम you know, if something changes और कोई bullish opportunity बनना शुरू होगा, तो of course we'll discuss. और अगर नहीं होगा तो विल टेक अ शॉर्ट सेल पोजीशन. सो अभी कुछ बुलिशनेस नहीं है. बैंक निफ्टी पे आते हैं. नाउ बैंक निफ्टी मंथली, लेट मी चेक मंथली चार्ट क्विकली. बेरिश डाइवर्जेंस, यू नो, नॉट द बेस्ट सेटअप्स. वीकली एज वेल, मैंने बोला था डबल टॉप करके ही गया है. अभी ये क्या नेकलाइन पे, दिस लेवल हियर 43800 के आसपास जो है ना, ये नेकलाइन होता है. सो अगेन यू कैन सी अ वेरी पुअर वीकली चार्ट व्हिच सजेस्ट कि वीकनेस अभी भी है इस चार्ट में. Now we come to, forget about my right hand side hourly chart. Okay, there are too many drawings here, so it might confuse you. I'll come to that in a bit. मैं उसको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में. डेली चार्ट में आप देख सकते हो, ये एक मेरा सपोर्ट लाइन है यहाँ पे 780 के आसपास, ये उसी के आसपास है ना. अभी एक अपटिक होने से एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता है, जो कि यू नो इट विल सजेस्ट. सो अगेन एज साइड मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे खुलता है. अगर ये ऊपर खुल के एक अच्छा कैंडल बनाता है और यहाँ एक ब्लू अपटिक हो जाता है, दैट मीन्स वी आर लुकिंग टू बाय बैंक निफ्टी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. बट उसका पहला टारगेट हो सकता है सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस तक ही हो. यू नो, इट्स नॉट अ बिग मूव ऑन द अपसाइड, बट हाउएवर लेट इट बी मेड. हम अभी क्यों डिस्कस करें,
अगर वो नहीं होता है तब तक ये बेरिश ही है। जैसे मैंने पहले बोला था, हम यहाँ थे आर्ली चार्ट पे, जब तक ये जो ब्लैक डॉटेड लाइंस है ना, ये वाले, ये मंथली सीपीआर है इस मंथ का, जब तक इसके नीचे है मैं हर वीक इसको सेल करने की ही कोशिश करूंगा। यू कैन सी let me just fix this future pivots weekly and tomorrow. All right, सो हमारा वाइड वीकली सीपीआर है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा कुछ डायरेक्शन देने वाला नहीं है। अगेन यहाँ पे भी बुलिश डाइवर्जेंस है आरडी चार्ट पे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल गो एंड टेस्ट। मैंने एक नेकलाइन बनाया था हेड एंड शोल्डर का, शोल्डर हेड शोल्डर, तो इसका नेकलाइन टेस्ट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इस सीपीआर पे और फिर गिरने लगेगा, दैट मीन्स इट्स गोना फॉल फर्दर एंड गुड फॉल। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया सीपीआर के और बंद हो गया, देन आई थिंक नॉट द नेक्स्ट वीक बट द वीक आफ्टर, जब मंथली सीपीआर नया से बनेगा, देन वी कैन चेंज आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड विल डिस्कस अबाउट दिस ऑन फ्राइडे स्कैन एज वेल। ठीक है, सो फिलहाल कोई बुलिश ट्रेड नहीं है, लेकिन मंडे डिसाइड करेगा कि हम इसको बाय करेंगे कि नहीं। ठीक है, सो दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू। नाउ क्विकली आई एम गोना टॉक अबाउट commodities. All right, very interesting. So I'm going to start with gold. Because of last week I actually missed a trade. This was fantastic and I'll show you कि कैसे मिस किया था इसको, एक briefly बताऊंगा. But anyway, gold because of uncertain situations also is doing very well. You can see that, and it's not gonna stop. It's gonna keep going up unless something changes. Silver as well, you can see there is a trend line here. तो यहाँ तक तो पूरा खुला हुआ है. Once again, अगर मैं weekly chart खोलता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है. मैं इसको एक बार हटा देता हूँ. And it looks fantastic. गैप डाउन था, गैप डाउन पे हैमर और फिर गैप एग्जॉस्टर. So this again you're hoping for or you're aiming for the prices to go higher. All right. So gold silver बहुत दूर है. इसे ट्रेड करने के लिए हमारे पास जो CPR लेआउट है, मैं उसको आपको बताता हूँ कैसे होता है. So very quickly, especially people, this is for people who are from our tribe watching this. You need to understand this, okay? So monthly CPR के ऊपर ये इस दिन बंद हुआ था. And this 2 hour candle में trade होता है 58,400 के आसपास. There was a daily narrow CPR, इसके नीचे stop loss and you would have held it. Every day CPR stop loss, ठीक है? So again now when because हमारे पास wide weekly CPR, next week भी हमारे पास wide weekly CPR रहेगा, ठीक है? अगर ये आज ऐसे भी बंद होता है तो. So maybe this will move sideways or something, but I don't see it giving you a very good trade unless you have a narrow daily CPR. जिसमें आप इंटरडे करके निकल जाना, बिकॉज इट वोंट हेल्प अदरवाइज. ऑलराइट, एंड दैट इज द सेम विद सिल्वर एज वेल. सिल्वर में देखो, सिल्वर में एक्चुअली मिल सकता है बिकॉज हमारे पास नैरो सीपीआर था यहाँ पे. ये एक आप सपोर्ट लाइन देख रहे हो मैंने बनाया था यहाँ से. अब ये मंथली वाइड सीपीआर है जो इसके ऊपर ये बंद होने जा रहा है. सो इसके अगर ऊपर बंद हो गया, सो दैट मीन्स इसके बाद मैं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में लेना शुरू करूंगा. सो इफ आई हैव now, if this is still a narrow CPR by the end of today, then we will take advantage of this whenever this comes, tests this, and we'll take an advantage of it. Otherwise, we'll see how the CPR, because अभी Friday अभी 8:30 ही बजे, तो 11:30 तक ये मार्केट चलेगा. तो जैसे भी ये खत्म होगा, we'll see if this is a narrow CPR, then we'll look to buy if possible. And unless that happens, of course, we are waiting. So silver में फिर भी आपको अभी ट्रेड मिल सकता है. गोल्ड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के कीजिएगा बिकॉज उसका बहुत बड़ा मूव आ चुका है. फिर अब हम गोल्ड की बात, क्रूड की बात करते हैं. क्रूड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, बिकॉज हम अगेन मंथली वीकली से करते हैं. मंथली ऑफ कोर्स इज गुड बिकॉज we've always spoken about this. Sorry, I'm going to open this chart here. Sorry, yes. So crude, as you can see, if I open a weekly chart, ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, एंड अगेन दिस, ये लेवल्स आ जाएंगे बिकॉज इट इज एट EMA बुलिश हरामी कैंडल एंड इट्स डूइंग वेल. सो वो लेवल्स आने का सिचुएशन है. Now in the daily chart, of course, we don't have a bullish divergence, but we had a gap up, gap test, and prices are going up. अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे पास 2 hour चार्ट में बेरिश डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं एंड 0-1-2 सेटअप्स बन रहे हैं, विच बेसिकली सजेस्ट कि इसको करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. सो बेसिकली इफ आई मेक अ like a wedge kind of a thing, this ऐसा कुछ बन रहा है. But of course I'm not in a favor of drawing lines. So let's come here. इसको एक बार CPR के लेआउट पे चेक करते हैं.
सीपीआर लेआउट पे मंथली सीपीआर के नीचे ही है, वीकली सीपीआर नैरो बनेगा अगर ये यहाँ पे बंद होता है, विच अगेन इज अ पॉसिबिलिटी। अगर नैरो सीपीआर के ऊपर रहता है वी कैन टेक दैट रिस्क एंड टेक दैट ट्रेड। अगेन मंथली सीपीआर के ऊपर अगर बंद होता है देन वी कैन यूज the weekly CPR and the daily CPR to take the bullish trade. So crude and silver, I think I'm going to mark this for my sakes. Crude and silver might give you a trade next week. अब हम आते हैं जिंक, विच इज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू डू हियर। जिंक पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है, इसको डिस्कस करके फायदा नहीं है। और लेट मी डिस्कस कॉपर हियर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। लेट्स स्टार्ट विद वीकली चार्ट। इनफैक्ट आई एम प्रीटी इंटरेस्टिंग। डोजी बन रहा है, इसका ओपन है 700, सो इफ इट क्लोजेस नियर 700 इट बिकम्स अ प्योर डोजी। हैमर बना था, फॉलो थ्रू, फिर डोजी एंड रिवर्सल हो सकता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। Daily chart में you can see, again depends how it will close today, we've got a lot of time left। ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे there was a very shady divergence which did not, ऊपर गया फिर आया डबल बॉटम। Now अभी आप ये समझो, ये डबल बॉटम दो तरीके से होता है। एक तो ये करेक्टिव वेव है, नीचे आप देखो वेव में आ रहा है, सो दिस मीन्स इट्स करेक्शन, इट्स नॉट ग्रेविटी ठक ठक नहीं हो रहा है। सेकेंड, यहाँ पे there is a bullish divergence which was on Tuesday, we entered on a Wednesday, still holding, believe me 5 पैसे से stop loss बच गए, so that is a good sign। and if the candle closes like this or next day gap up खुलता है, that is beautiful। now in a 2-hour chart, because I follow counter trend strategies like divergence, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 hour में bullish divergence था, यहाँ पे आया, again support लिया है, and again अभी फिलहाल decent candles बना रहा है, ठीक है। Now if I open a 4-hour chart, that is what internationally is very popular। यहाँ पे एक bullish divergence था, ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे अब ट्रिपल bullish divergence बन रहा है 4-hour chart में, जो अपटिक अभी हो रहा है। अगेन 1.5 घंटे बचे हैं, we cannot say anything, जो होगा देखा जाएगा। But this seems like a decent chart and suggests that copper might go up, all right? So again, educational purpose only, so please put it on your own system before you take a call। now let's plot it in the CPR layout, ठीक है, क्योंकि ये मंथली CPR के नीचे, तो हमें हमेशा लगता है कि वीकली CPR के नीचे नीचे ट्रेड करेंगे, मंथली S1 के भी नीचे। तो अगर 704 और लेवल्स के ऊपर चला जाता है, which is you will have a narrow weekly CPR, which is a very very good sign। and of course if it goes above this, then you can expect the prices to go higher as well, all right? so that's a good trading opportunity। यहाँ पे S1 भी है, S1 के भी ऊपर चला जाएगा तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। टुडे एज वेल, ये जो स्पाइक आया था नीचे, ये नहीं आना चाहिए था, आप देख रहे हो, ये लेट मी पुट अ 30-minute चार्ट सो दैट यू विल सी प्रॉपर्ली। सो दैट दिस इज योर सपोर्ट लाइन, ये आपका ब्रेकआउट हुआ था, ये उसका फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है। दिस इज अ चैनल विद इन अ चैनल एज वेल। अगेन डोंट गेट इनटू इट टू मच, डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको। बट अगर ये ऐसे ऊपर की ओर बंद हो जाता है या आज का गैप एग्जॉस्ट कर देता है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। दिस डेली कैंडल इज अ वेरी वेरी गुड candle for bullish people because there is a bullish divergence। once again गैप डाउन खुल जाता है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर मंडे को गैप अप खुल के ऊपर की ओर जाने लगता है, then I think copper is a decent setup। okay, so copper is again another commodity that can give you a trade on the upside। CPR हमारे फेवर में नहीं है, because generally मैं CPR के नीचे रहता है तो बाय नहीं करता हूँ unless S1 पे रहता है, ये S1 के भी नीचे, so वो एक थोड़ा सा trouble है, but nonetheless there's a divergence in the daily chart, so that's in। then we talk about natural gas। now natural gas, you can see this, right? so that's your resistance, it broke out, so this is a daily chart। let me start with monthly chart। देखो monthly chart very simple, right? मैंने ये पहले भी बताया था, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये EMA पे आया है एंड ये EMA पे डोजी बना रहा है। अगर 10 दिन अभी भी है हमारे पास, nonetheless अब इसको हम वीकली में देखते हैं। सो वीकली चार्ट आई थिंक इज अगेन क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ बेरिश डाइवर्जेंस, राइट? बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, ये डाउन टिक हो रहा है। अगर ये आज ऐसे ही बंद हो गया, और ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये हमारा, इफ यू गो बैक टू आवर वीडियो फ्रॉम लास्ट वीक व्हेन आई डिड वन, कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो रहा है जो मंथली EMA पे हो रहा है। दिस वाज एट 280 लेवल्स, मैंने एक जोन भी ड्रॉ किया था, एंड वहां पे अगर बेरिश डाइवर्जेंस बनता है देन दिस कुड fall down further। so setup ऐसा ही है, डाउन टिक हो रहा है। so अब मैं डेली चार्ट पे अगर आता हूं,
So you can see that's your resistance, immediate resistance. अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, अगर ये गैप टेस्ट करने के लिए भी आएगा ना, तो यहाँ से 20 पॉइंट का टेस्ट हो सकता है. ऑलराइट, 20 पॉइंट का टेस्ट हो सकता है, एंड इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट बिकॉज वहां ये जो लेवल से गिर रहा है, दैट इज योर मंथली ईएमए, व्हिच इज पॉसिबल. ऑलराइट, सो बेस्ट प्लेस टू एंटर. अगर ये ट्रेंड में आ जाता है, तो देखिए ऊपर तो ट्रेंड में नहीं था, जब नीचे था तब ट्रेंड में था. अगर ये ट्रेंड में आ जाता है तो इसका मतलब ये आएगा ईएमए पे, आएगा ईएमए पे हम ट्रेड करेंगे, आएगा ईएमए पे, आएगा ईएमए पे ट्रेड करेंगे. अभी इसको हम एक बार सीपीआर लेआउट में प्लॉट करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें. सीपीआर लेआउट में सेंसर डाइवर्जेंस है, तो हम डाइवर्जेंस का केयर नहीं करते. ऑफ कोर्स अगर ये मंथली सीपीआर के नीचे आ जाएगा, सुपर हो जाएगा. नेक्स्ट वीकली सीपीआर के नीचे ही रहेगा, बट मंथली सीपीआर के नीचे आई थिंक नेक्स्ट वीक वेट करके, एंड देन इसका जब एक्सपायरी शिफ्ट होगा, आई थिंक एक्सपायरी शिफ्ट होगा 27 अक्टूबर, नेक्स्ट फ्राइडे, उसके बाद हम इसका ट्रेड लें तो बेटर रहेगा. ठीक है. सो नेचुरल गैस स्टिल willing to take a trade on the short side if it ends like a bearish divergence in the weekly chart. Of course, we got to wait and see how it ends today. All right. So we've done stocks that I've scanned. We've done indices. We've done commodities, and now we're gonna speak about the stocks, the cash stocks that I think will be an interesting pick. Okay. So before we go to your stocks, let's discuss this as well. So हम अगर पहला स्टॉक का बात करते हैं तो वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल. मंथली में बुलिश डायमंड था, ऊपर गया, फिर ईएमए पे आया है. ऑफ कोर्स दिस इज कंसिडरिंग कि ये गिरे नहीं, यहाँ से ऐसा ही सेटअप रहे. उसके बाद अब यहाँ से सिंस 1250 ऑड लेवल्स, दिस इज नो इनफैक्ट सिंस 1150 ऑड लेवल्स, दिस इज वेयर यू नो वी आर बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. हमने वीडियोस भी पहले बनाए, आप देख सकते हैं. ये यहां से ऊपर गया, ये पहली बार ईएमए पे आया, ईएमए के बाद ये वापस ऊपर जा रहा है. अब हमें एंटर करना है. कैसे करेंगे? वीकली चार्ट में देखो गैप अप है, केम टिल द ईएमए, लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव एंड इट इज गोइंग अप. सो द प्राइस इज यू नो इट इज एक्चुअली बाइंग फ्रॉम दिस ऑड लेवल 1350 लेवल्स. बट नॉनदलेस अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख रहे हो, तो दिस इज समथिंग दैट has the setup. Of course, educational purpose only, so please do your own research, fundamental, whatever. This is purely on technical charts. So if you think that this is something that might give you an opportunity, keep an eye out for it. The next stock is this one here, Dhanseri Tea, and which is again monthly divergence, which is not the best divergence, but it does have a setup. ये एक्चुअली ट्रेंड लाइन है, और मैं ये वाला वीक इंगल्फिंग बुल बना के ब्रेकआउट हुए. मुझे लगा था ये ब्रेकआउट हुआ है, फॉलो थ्रू नहीं हुआ, लेकिन अभी वापस ब्रेकआउट हुआ है. सो दिस इज अगेन वन स्टॉक दैट यू कीप एन आई आउट फॉर. अगर इसका फॉलो थ्रू होता है, देन दिस इज समथिंग दैट कैन गो हायर एज वेल. ठीक है. सो धनसेरी टी इज अनदर स्टॉक दैट यू नीड टू कीप एन आई आउट फॉर. दैट इज द सेकंड स्टॉक. थर्ड स्टॉक हमारे पास जो है वो है एशियन ग्रेनिटो. नाउ एशियन ग्रेनिटो स्टार्टेड विद अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर, went above the EMAs, and अभी ये मंथ भी देखो इतना सुंदर कैंडल बन रहा है. In the weekly chart you can see point of interest, breakout, change in polarity, now breakout of that resistance level. Now इसका दो पोजीशन है, या तो ये ऊपर चलते रहेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, EMA पे पुल बैक करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और या तो this comes back here to test it and then goes back up. Okay, change in polarity करके ऊपर बढ़ेगा. So in both the cases देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही बढ़ेगा. सो अगर ये चेंज इन पोलैरिटी होता है, दैट इज अ बेटर प्लेस टू एंटर. बट अगर आप जनरली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एशियन ग्रेनिटो एंड ऑल, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट ट्रेडिंग, आई थिंक. सो आप दोनों तरीके से अपने हिसाब से रिसर्च करके कर सकते हैं. सो ये हमारा थर्ड स्टॉक था. एंड ऑफ कोर्स हम तीन स्टॉक आज डिस्कस करें. हमने पहले ओमेक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो यहाँ पे मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस था, आरएसआई में भी था, एंड समवेयर अराउंड 60 ऑड लेवल्स में एंट्री था. अभी भी द फर्स्ट सीलिंग हियर इज दिस गैप. ये जो गैप यहाँ पे है, तो ये गैप एटलीस्ट मतलब prices should come till there. I don't know what's going to happen. Of course, in the weekly chart it looks okay, but अगर थोड़ा pull back होता है EMA तक, वो भी जायज है, मतलब हो सकता है. You don't have to worry about it. So this is a fourth stock which we've discussed earlier also. But again, if you are keen in investing, then these are stocks that you want to check out for according to the technical charts. Of course, fundamentals, do your own research. I'm not going to talk about that. All right. So this is it, guys. Anyone who wants me to look at any other stock, please put it in the chat box.
I've got one NMDC Steel. Let me look at NMDC Steel. I don't know why this is here. Oh, wow. All right, so NMDC Steel is fairly new data, yeah. So I don't know, I know ऊपर से काफी गिर गया है, लेकिन मिला भी यहाँ पे, तो I think it's okay. There's no data, so I wouldn't worry about it too much. I'm not. I don't know if there is a news on it. क्यों gap down इतना खुल गया मुझे भी नहीं पता. But ये gap अब important जाएगा. जब तक ये इस gap के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक maybe it just moves here, stays here or whatever. But yeah, data ही नहीं है. So बिना data के technical analysis नहीं हो सकता है. So we need more data. तो मैं daily chart में अगर देखूँ, it's gone below the EMS, so we need to wait for any buying opportunity. Selling also, कुछ selling क्या करोगे stocks में, cash stocks में तो. All right, does that make sense? Okay, I hope I answered, because no data यार, मैं जबरदस्ती क्या बोलूँ इस stock के बारे में अभी. All right, anything else that I can, any other stock that you'd want me to have a look at? NMDC is already done, NMDC CU. Okay, so we've already discussed, I think because there are uncertain situations, people who are not, who are only trading in stocks and futures, be very careful. A lot of people, I think people who are doing intraday trading might be making some money, but वो भी पैसे नहीं कमा रहे हैं, because it is opening gap down or gap up and moving sideways throughout the day. Maybe whoever's trading on a 5-minute chart, थोड़ा सा लास्ट में जो फॉल आता है वो एक पिवट रेंज से गिरता है, वो आप कर सकते हो. But people who are carrying positions, yes, if they're on the right side of the trend, the gap gives you enough money. Now, if you're worried or scared, or I don't know if scared is the right word, अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि हाँ ये कैसा खुल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, it is okay to stay aside. It's okay to wait for things to, get back in control. It is also okay for you to trade commodities. Commodities में बहुत से setups हैं, बहुत अच्छी तरीके से move हो रहा है, streamlined है, तो आप उसको भी देख सकते हैं if you want. But nonetheless, all well. All right. So I don't think I've got any other stocks from the audience today to have a look at. So let us call it a day, and enjoy your weekend. Have a great weekend. Share this video with everyone else who you think might benefit from this video. Of course, it's festive season here in Calcutta, so happy Durga Puja, everyone. May God bless you, and I'll see you again next Friday. Till then, stay safe and enjoy your holiday. Bye-bye.